पवन सुत हनुमान की, सियाभज रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की। Take the match now, light the diya. Om Shubham Bhavatu Kalyanam Ayurarogya Dhan Sampada Shatru Buddhi Vinashaya Deep Jyotir Namostute Deep Jyotir Parabrahma Deep Jyotir Janadhanam Deepo Me Harto Papo Pratyaksha Deep Jyotir Namostute Om Srim Hrim Srim Kamale Kamalalaye Prasiddha Prasiddha Sakala Saubhagyam Dehime. With the flowers. Srim Hrim Srim Om Mahalakshmi Namaha. Pass your hands over the Deepak. Shubham Bhavatu Kalyana Bhavatu Mangalam Bhavatu Deepaswarupine Namaham Deepam Prajwalitoyam Atah Sankalpam. Sankalp, take a palm leaf with supari, few petals, rice grains. Put a coin inside there. We chant the Sankalp. Sankalp is a vow before we start our puja to help focus our mind. Om Hari Om Tat Satom Tat Satom Sri Hari Vishnu Vishnu Nama Paramatmane Sri Purana Purushottamaya Sri Parameshwaragyaya Adya Brahmane Dite Paradhe Shri Shvedvaraha Kalpe Vaivasvatmanavantare Ashtavanashati Tame Kalyuge Kalipatham Charane Jambu Dvipe Uttarayamerika Kande Kanada Deshe Brampton Nagare Bhavani Shankar Mandare Aryavratam Targatam Brahmavrate Kadese Vikram Shake Baudhavatare Varthamani Yathanam Samvatsare Shri Shubha Samvata 2080 Shri Nalanamabdah Samvatsare Shraavan Mase Shukla Pakshe Somvasare Asya Sri Panchami Tithauryam Chitra Yogaha Shubha Yogaha Balokaran Ravi Dakshinayane Evam Guna Visheshana Vishisthayam Shubha Punya Dine Sakala Sruti Smriti Pauranoktaha Phalapraptikamam Amuknam Yajmanasya. Everybody call a right name. Sapparivarnam dheyasya muk sharmaham mamatmana saputra bandhavasya Shri Ganapati Bhagavan Pujanam Kalasthapana Varun Devata Asya Sri Bhavani Shankara Abhishekam Sri Rudra Abhishekam Shravana Somvar Pujanam Karishye Namaha Sarvadeva Namaskaram Naga Panchami Pujanam Dhyayami Pujanam Aratikyam Samkirtanam Shiva Chalisa Pat Rudrashtakapatah Mahaprasadam Sarvadeva Namaskar Pujanam Purvakam Nairujya Dirghayu Pushti Dhanadhanya Smridhyatam Navagraha Makhena Yache Iti Sankalpam Kalpam. Take grains in your hand now, chant the Swasti Vachana. Harihi Om Om Swasti Na Indro Ridrasravaha Swasti Na Bhogha Visvavedaha Swasti Na Starakcho Arishtanemihi Swasti No Brihaspati Dadhadom Payaha Vridhibhyam Paya Okhadi Kupayo Dibhyantarikshe Payodaha
वयस्वदेहे व्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णुरराजमसि विष्णोः सप्त्रैस्थौ विष्णोः शौरसि विष्णौ ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवेद्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ इमा रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामये मतेः यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वाम्पुष्टाङ्ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् ॐ एतन्ते देव सवितर्यज्ञ प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवं तेन यज्ञपतिं तेन मावः ॐ मनुर्ज्योतिर्जुषदामाजस बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्दनो त्वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवा स इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा एक वै प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यज्ञन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितां भवति ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसौ मम आहमजानि गर्भधमादमजासि गर्भधम् ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्तवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यस्तवो नमो नमो ग्रीष्मेभ्यो ग्रीष्मपतिभ्यस्तवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तवो नमः ॐ सुमुखस्यैकगन्धस्य कपिलो गजकर्णक लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अवडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विभाये च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सैव विघ्नस्तस्य न जायते ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यं नमः ॐ बाणीरण्यगर्भाभ्यं नमः ॐ सचिपुरन्दराभ्यं नमः ॐ मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वाभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः इति स्वस्तिवचनम् ॐ गं गणपतये नमः. Take flowers, invoke the presence of Lord Ganesha. ॐ गं गणपतये नमः. ॐ गं गणपतये नमः. ॐ गं गणपतये नमः. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं. महागणपतये नमः. ध्यानं समर्पयामि नमः. Throw some rice in front now. ॐ गं गणपतये नमः. आवाहनं समर्पयामि नमः. Again. ॐ गं गणपतये नमः. आसनं समर्पयामि नमः. Wash the feet and the hands, mouth and the head of Lord Ganesha, or throw water 4 times. ॐ गं गणपतये नमः. पादयो पादयामि नमः. ॐ अर्घयो अर्घयामि नमः. मुखयाचमनीयं समर्पयामि नमः. सर्वाङ्गे स्नानं समर्पयामि नमः.
पञ्चामृतमहास्नानं समर्पयामि नमः। पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रौदशा सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवत्सरेद पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां गङ्गणपतये नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ॐ गं गणपतये नमः। यज्ञोपवीतिधारयामि नमः। ॐ यज्ञोपवीतिधारयामि नमः। ॐ गं गणपतये नमः। यज्ञोपवीतं परमं भवेदं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तादायुष्समग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा भगवते गङ्गणपतये नमः। चन्दन कुङ्कुमं च तुभ्यं नमः। त्वं श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरासृष्टः चन्दनं प्रतिगृह्यतां गन्धं धारयामि नमः। त्वं कुङ्कुमं कामना दिव्यं कामना कामसम्भव कुमकुमेन चिते देवा तथा शान्तिं प्रयच्छ मे। ॐ गं गणपतये नमः। गन्धं धारयामि अक्षतां समर्पयामि नमः। त्वं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। दुर्वां च तुभ्यं समर्पयामि नमः। Take the durb grass in your hand and with some petals as well, we'll offer archana to Bhagwan Ganesha. ॐ सुमुखाय नमः। ॐ एकदन्ताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ धूम्रकेतवे नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ भालचन्द्राय नमः। ॐ गजाननाय नमः। ॐ वक्रतुण्डाय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। ॐ हेरम्बाय नमः। ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। सिद्धिलम्बोदर महागणपतये नमो नमः। पुष्पं दुर्वं समर्पयामि। धूपं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमाग्रेहः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। गङ्गणपतये नमः। दीपं दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च अग्निरजायत। दीपं दर्शयामि नमः। नैवेद्यं take one fruit or prasad. नैवेद्यो नैवेदयामि नमः। नाभ्या आसेदन्तरिक्षगों सहिष्णुर्द्यौः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि। श्रीफलं समर्पयामि। मुक्षुद्यार्थाम्बुलानि समर्पयामि। आचमन्यं समर्पयामि। ताम्बूलं समर्पयामि। यत्पुरुषेण विखादेवाजनमतन्वत वसन्तोषाशिराजङ्ग्रेक्मैद्मः शरद्ववेः। दक्षिणां च तुभ्यम्। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकासीद सदाधार प्रतिविद्यामुते मां कस्मै देवाय विखा विदेमः द्रवदक्षिणां समर्पयामि। Take the आरती। ॐ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव मात जानकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लदवन को भोग लगे। Anybody in the audience who have a fruit or dakshina or flowers to offer to Ganesh ji, even if it's a flower you want to come, please come forward. Any one of the bedis and offer it.
अंधे को आँख देख कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। भव से पार करो नाथ भजन करो तेरा, लदवन को भोग लगे संत कर। अगर आपके पास प्रसाद है तो आप आ सकते हैं चढ़ा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जो तेरा ध्यान करे ज्ञान मिले उसको, छोड़ तुझे और भला जाऊं मैं किसको। हे देवा कृपा करो कष्ट हरो मेरा, लदवन को भोग लगे संत करे सेवा। बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। ओ माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगदिताय, नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमः। बोले गणपति भगवान की जय। इति पूजनेन, take a spoonful of water and throw it in front of Ganesha. इति पूजनेन श्री गणपति देवता प्रियंताम नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय। All right, put your hand now on the coconut. Giving thanks to the Kalash, Varun Devata. Om कलशस्य मुखे विष्णु कंधे रुद्रा समासिता, मूले तस्यास्ते ब्रह्म, मध्ये मातृगणस्मृता, कुक्षौ तु सागरा सर्वसप्तदीपवसुन्धरः। अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः, अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता। बोले वरुण भगवान की जय। ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। Throw water 4 times. ओम पादयो पाद्यं समर्पयामि, अर्घयो अर्घयं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि। 1 spoon milk पंचामृत महास्नानं। पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोदशा, सरस्वती तु पंचदा, सोदेशे भवत्सरेत्। पंचामृत स्नानान्त पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मां। For a piece wet thread, यज्ञोपविधिधारयामि नमः। ब्रह्माजनानं प्रथमं प्रसदादिशिमतः सुरुचो वेनावः सबुज्ञोपमाश्रविष्टाः सतश्च निमसतश्च वैवः। ब्रह्मसूत्राय नमः। चंदन कुमकुमं जतुभ्यं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेषिणीं ईश्वरीवं तामिहो गन्धं धारयामि नमः। अक्षतां समर्पयामि। अक्षन्नमिवदञ्च जवप्रिया दुःखदस्तोखदस्वाभानवविप्राणविष्टयामति जोजान्विन्द्रते हरि। अक्षदान् समर्पयामि। अक्षदान्ते बिल्मपत्राणि दुर्वाङ्कुराणि समर्पयामि। Take petals now in your left hand for Varun Archana. ओम वरुणाय नमः। ओम प्रचेतसे नमः। ओम स्वरूपिणे नमः। ओम अपाम्पतये नमः। ओम मकरवाहनाय नमः। ओम जलाधिपतये नमः। ओम पाशहस्ताय नमः। ओम अनकर्मणि भूषणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम नानाविध परिमल पुष्पाणि समर्पयामि। बम वरुणाय अपाम्पतये नमो नमः। धूपम ओम धूरसि धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं ज्योत्स्मान् धुर्वदितं धुर्वजं वयं धुर्वा महादेवानाम शिवनिधमगों सस्निधमं बभृतमं दुष्टतमं देवहूतमं मधुपमाघ्रापयामि। भगवते बम वरुणाय नमः। प्रत्यक्ष दीपम दीपम
ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि भगवते वं वरुणाय अपां पतये नमो नमः। नैवेद्यं प्रसाद प्रसाद प्रसादम्। ॐ नाभ्यासेदन्तरिक्षगों शेष्णोर्द्यौः समवर्तता पद्भ्याम्भो मृदिशः श्रोत्रान् तथा लोकाम् अकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि श्रीफलम्। ॐ ज्याः फलिनिर्जा फला पुक्पाजास्तपुक्पिणी बृहस्पति प्रसुदास्तानमुञ्चन्तगुंसः ऋतुफलानि समर्पयामि ताम्बूलानि समर्पयामि जत्पुरुषेण विखादेवायजनमतन्वदवसन्तो शासिदाज्यं ग्रीष्मैद्मः शरद्भवेः ताम्बूलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणाम्। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकाशिरसदाधार पृथिविद्यां ते मां कस्मै देवाय विखा विधेमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि बं वरुणाय अपां पतये नमो नमः। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका सदाधार पृथिवीमुते मां कस्मै देवाय विखा विधेमः दक्षिणां समर्पयामि नमः। Take the आरती। कर्पूरार्तिक्यं कदलीगर्भादिसम्भूतं कर्पूराञ्जपरिवितं मारातीक्यमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि। ॐ वं वरुणाय अपां पतये नमः। ध्यानम् ॐ प्रार्थना ॐ देवदानवसंवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भविधृतो विष्णुना स्वयं त्वत्त्वये सर्वतीर्थानि सर्वे देवा त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणप्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुतं च प्रजापति आदित्यवसवो रुद्रा विश्वदेवा सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतकामफलप्रदा त्वत्प्रसादामिमं यज्ञं कर्तुमिह जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासस्ताय दशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते जलादिनाथाय नमो नमस्ते अपां पतये वरुणाय नमो नमः। बोले वरुण भगवान की जय। अनेन पूजनेन श्री वरुण देवता प्रियन्तां नमः। All right, let's go to Parvati. Yes. Just bring the thali with you that has a diya inside. The arti, bring the whole thali. And maybe a few petals to do dhyanam. Okay, Jai. But you have flowers? Flowers?
Let's clasp our hands, everyone. Please come over here, everybody. Come over and get a darshan of the Lord. Bole Umapati Mahadeva ki jai. Bole Shankar Bhagavan ki jai. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Today is Naga Panchami, a very beautiful day for Shivji's worship to help conquer the doshas inside of us. Doshas mean anything disturbing. That's that energy or that aura that may reside in us. On this day we pray that may His power and may His blessings be upon all of us. Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajat Girinibham Charu Chandra Vatansam Ratna Kalpo Jvalangam Parashumrigavara Bhiti Hastam Prasannam Padmasinam Samasta Stutiramargano VyaghraGhritim Vasanam Vishwadhyam Vishwabhijam Nikhil Bhayaharam Panchavakram Trinetram Tasmai Namah Paramakarana Karanaya Dipto Jvalajvalita Pingala Lochanaya Nagendrahara Kritakundala Bhushanaya Brahmendra Vishnuvardaya Namah Shivaya Sambasara Shivaya Namah Dhyanam Samarpayami Namah Avahanam Samarpayami. Come put your flowers, everybody. Dhyayami Avahayami Namah Asanam Samarpayami. Sorry. Dhyayami Avahayami Namah Om Padhayo Padhayami Namah Om Annapurna Divyai Namah Arghayo Arghayami Namah Shri Mahaganapataye Namah Shri Bhavani Shankaraye Namah Om Bhavani Shankaro Vande Shraddha Vishwasya Rupinam Yabhyam Bhinana Pashyante Siddha Swantha Sameshwaram Vande Bodhamayam Nityam Guru Shankara Rupinam Yamasrito hi vakro api Chandra sarvatra bandhate Annapurne sadapurne Shankara prana vallabhe Jnana vairagya siddhyartham Bhiksham dehi cha parvati Om vidyudhyam samaprabham mrigapatim Skandastatham abhishanam. Get your thali, everybody. Get your thali. Kanya bhi karavala kheta vilasadhasta vira sevitam haste chakragala shiketa vishikham chapam gunam tarajanim. Ring the bell, guys. Vibhrana manalatmikam shashidharam durgam trinetram bhaje Kalabhrabhram Katakshairarikula Bhayaram Maulibadhendhurekam Shamkham Chakram Kripanam Trishikam Apikare Arthi Rodvahantim Trinetram Sinhaskandha Dhirudham Tribhuvanamakilam Tejasa Purayantim Dhyaye Durgam Jayakhyam Tridasha Parivritam Sevritam Siddhikame
श्री महाभवानी शंकर शिवाय नमः। ओम श्री भवानी शंकर शिवाय नमः। दीपं दर्शयामि नमः। ओम चंद्रमा मनसो both of you come same time. Come. चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोले भवानी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। Om, come over here now. Om Namah Shivaya. Vande Shambho Namah. Sambhave Namah. Shashishekharaya Namah. Neelakanthaaya Namah. Umapataye Namah. Digambaraye Namah. Om Vande Devamumapatiं Suragurum Vande Jagatkaranam Vande Pannagabhushanam Mrigadharam Vande Pashunam Patim Vande Surya Shashankavahnayanam Vande Mukunda Priyam Vande Bhaktajanashrayancha Vardam वंदे शिवं शंकरं। शांतं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुभभयदं दक्षिणांगे महान्तं नागं पाशं च घण्टादमरुकसहितं चाकुशं वामभागे नानालंकारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। ध्यानं समर्पयामि नमः। ओम आवाहनं समर्पयामि नमः। ओम सांब सदा शिवाय नमः। आवाहनम् आसनं समर्पयामि नमः। ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः। ओम ध्यानं पाधयो पाधयामि नमः। ओम पाधयो पाधयामि नमः। ओम शंभवे शमयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सांब सदा शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। 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 पाद्यम् अर्घ्यं समर्पयामि नमः। ओम अर्घयो अर्घयामि नमः। अर्घयो अर्घयामि नमः। सांब सदा शिवाय अर्घयं गृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतैः सह करुणाकर मे देवानां गृहाण अर्घ्यं नमोस्तुते आचमन्यं समर्पयामि नमः। ओम सांब सदा शिवाय नमः। अर्घयो अर्घयामि नमः। आचमन्यं समर्पयामि नमः। सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम् आचम्यतां मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। अर्घयो
अर्घयामि नमः ॐ मुख्याचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि नमः ॐ सर्वांगे स्नानं जलुभ्यं समर्पयामि नमः ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरुं पञ्चामृतमहास्नानं जलुभ्यं नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शम्भवे नमः ॐ पञ्चामृतमहास्नानं पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिघृतं मधुः शर्करा समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्णामः पञ्चामृतमहास्नानं जलुभ्यं समर्पयामि नमः ॐ अस्य श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमः ॐ शम्भवे नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ नीलकण्ठाय नमः ॐ उमापतये नमः इति रुद्राभिषेकः शम्भवे नमः शङ्खेन्नवाभं तीव सुन्दरतनुं शारदूलशरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघुशमुनं कल्याणकल्पद्रुं नौमिध्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददातिं सतां शम्भो कैवल्यपि दुर्लभं कलानं धन्दकृद्ध्यो वसो श्रीशङ्करा शन्तनोतु मे साम्ब सदाशिवाय नमः ॐ शम्भवे नमः घृत्पङ्कः विश्यानां पायसं सासर्करं नानाविधञ्च नैवेद्यं पयस्नानं घृतस्नानं मधुस्नानं समर्पयामि नमः मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्ना सन्तोषधिः मधुनुत्यान्मतोषसो मधुमाडपार्थिघं रजः मधुसस्तिनोपितः मधुमाङ्गस्तु सूर्यं मधुगावो भवन्तु न मधुस्नानं पञ्चामृतमहास्नानं दुग्धस्नानं दधिस्नानं जतुभ्यं नमः ॐ शम्भवे नमः बोले शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो ओम भवानी शंकर भगवान की जय All right. We'll start the Rudrabhishekam now with everybody. Om. All right, guys, you take over here. Madhuvataritaayate madhuksharanti sindava madhvirana santoshadhi madhunutyamatoshasho madhumarapatagum rajah madhu sastino pitah. All right, guys, who's chanting the Rudram? So today we will do only milk abhishekam, no chandan and so. Milk mixed with juice. So this is what everybody will be given. The shrotas will start first. One
अध्याय है। ओम ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवातोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते तनुः। शिवा शरभ्यायातवतया नो रुद्रमृगया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनीः। तया नस्तनुवासन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामीशुं गिरिशं तहस्ते विपर्शस्तवे। शिवां गिरित्वा कूर्माहि वंशी पुरुषं जगता। शिवेन वचसा त्वा गिरिशा चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयशकं सुमनासत। अध्यवोचति वक्ता प्रथमो देव्यो विशकः। ऐहिकश्च सर्वाजम्पयन् सर्वाश्रयातु धान्यः। असो यस्ताम्रो अर्णवभ्रू सुमङ्गलः। ये क्षेमाकं रुद्र अभितो दिक्षोषुताः। सहसो वैश्वानरेमहे। असौ योगसर्पति नीलग्रीवो विलोहिता। उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृदयातिना। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुषे। अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो कर्णमः। प्रमुञ्च दन्वनस्तमुभयोरातियोर्जां। व्यासे हस्तपुराता भगवो वप। अवतत्तदनस्त्वगं सहस्राक्षा शिरे निशीर्य शल्याना मुखा शिवो न सुमना भव। विद्युं तनूकपर्दिनो वशल्यो बाणवागमुत। अनेशनस्य शिवा आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मृतुस्थं हस्ते बभूवते तनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वयमक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अश्वायुधाय नहताय दृष्णवे। उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव दन्वने। परिते दन्वनो हेतिर्स्मान् वृक्तु विश्वतः। अतो य अशिरिस्तवारे अस्मन्निदेहितं शम्भवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम नमो हिरण्यबाहवे सेनान्येषां च पतये नमो नमो। वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः। सस्पिञ्जराय तुषीमते पथीनां पतये नमो नमो। बभ्रुषाय विव्याधिनेनानां पतये नमो नमो। हरिकेशायोपवीतने पुष्टानां पतये नमो नमो। भवस्य हेते जगतां पतये नमो नमो। रुद्राय तथा वनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः। सूताय हन्ताय वनानां पतये नमो नमो। रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो। मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो। भुवन्तये वाणिवस्कृतायोषधीनां पतये नमो नमः। उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पतीनां पतये नमो नमः। कृष्णगीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः। ककुभाय निषङ्गिणे स्त्रीणानां पतये नमो नमो। निषङ्गणे इषधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो। वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पतये नमो नमो। निचेरये परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः। सखाभिभ्यो जगागुंसभ्यो मुष्टतां पतये नमो नमो। सिमर्भ्यो नक्तं चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः। उष्णीशने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः। इषमर्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः। आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः। आयच्छभ्यो वृषजभ्यश्च वो नमो नमो। स्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः। आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः। नमः सभाभ्यो जागभ्यश्च वो नमो नमः। शिष्यभ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः। सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो। अश्वेभ्यो सपतिभ्यश्च वो नमः। नमः आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः। उगणाभ्यस्त्रगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमो। वृक्षेभ्यो वृक्षपतिभ्यश्च वो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो।
गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो रूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो मर्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः संगृहीतृभ्यश्च वो नमो नमः समस्तभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुजेष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः शुक्रेभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः शनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शशिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्यक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीजुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो वृते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शीव्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोत्रस्याय च द्वित्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च प्रगल्भाय च नमो जघरण्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खर्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः सर्वाय च प्रतिसर्वाय च नमः आशिषेनाय च आश्वथाय च नमः शूराय च विभिन्नते च नमो वर्मणे च वरुधरे च नमो बिल्वने च वैजने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्टवे च परमेशाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु जिमते च नमः तीक्ष्णे च विचायुधने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः सूत्र्याय च पथ्याय च नमः कात्याय च नीत्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमो नात्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च भट्याय च नमो वर्षाय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इन्द्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वासव्याय च वासुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो अन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रधरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रबध्याय च नमः किगंशिलाय च शयनाय च नमः कपर्दने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः कुहाट्याय च हृदेशाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्णाय च पर्णशध्याय च नमो पकुर्मानाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विचिन्तकेभ्यो नमो विचिन्वकेभ्यो नमः आहिरथेभ्यो नमः आमीर्वर्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनामाभिर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाः भेषजि शिवा रुद्रस्य भेषजि तया नो मृतजीवसे इमाघुं रुद्राय तवसे कपर्दिने चतुर्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृदानो रुद्रोतनो मयस्कृधीक्षयद्वीराय नवसा विधेमते यच्छञ्चयोषमरुराय जे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधीः पितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनवोरतिरीरिषा मानस्तोकेतनये मान आयुष मानो घोषो मानो अश्वेषुरीरिषा मानस्तु वीरान्मानो रत्रभामितो वधीर्हविष्वन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उत पौरुषग्ने क्षेत्वीराय सुं नमस्मे ते अस्तु
रक्षा च नो अधिचदेव ब्रूह्यता च नश्चर्म यच्छति बर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवान् मृगन्य भीममुपहर्तुमुग्रम् वृदा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्नेव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामगवभ्यस्तनुष्वमेढुस्तोकायतनयाय मृदय मीढुष्टमशिवतमशिवो नस्तमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यासे सहस्रगं हेतयोन्यस्मन्निव पन्तुताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवो स्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्या तेषाकुं सहस्रयोजने वदन्तानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाः सर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाः रुद्रा उपश्रिता ये वृक्षेषु सस्पेञ्चरा नीलवृतः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्षयैलवृदाय व्युतः यतीर्थानि प्रचरन्ति सखावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंस्तश्च रुद्रावितस्थिरे तेषां सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमशवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतिचीर्दशोदिचीर्दशो ध्वास्तेभ्यो नमस्तेन मृतयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेषितं भोजं भेदधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु यो ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विदेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुस्तु हि यस्य सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो भेर्देवमसुरं दुमस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे एष यो युगं शिवाभिमर्शनः एते सहस्रमयितं पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वनवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्योर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनानेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवो ॐ शान्तिः 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् निधनपतये नमः निधनपतान्तकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयते पाणिमन्त्रं पवित्रम् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्वमा भवो भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः बलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानाम् ईशान सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकाय पतये उमापतये पशुपतये नमो नमः शाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानाम् ईशान सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो शान्ति शान्ति हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकाय पतये उमापतये पशुपतये नमो नमः नीलकण्ठम् उमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्योर्करिष्यते
जय। बोले
भोलानाथ
बोलिए भवानी शंकर भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणां वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कबह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। प्राणाधार प्राणेश्वर ठाकुर श्री राधा गोलोक बिहारी और भगवान शंकर जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए समस्त पूर्वाचार्यों को प्रणाम करते हैं और भवानी शंकर में विराजमान सभी देव प्रतिमा को प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों को और सभी श्रोताओं को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आज देखिए ऐसा आप और हम सब का सौभाग्य है, इतना बड़ा अभिषेक जैसे एक बाय एक करके लाइनबद्ध जैसे भवानी शंकर में नियम से सारा सेवा पूजा होती है। मुझे लगता है कोई हिंदू सभा वगैरह कोई भी मंदिर में नहीं होता होगा, क्योंकि वहाँ मारा मार भागा भाग यही चलता है सबसे ज़्यादा। तो हमारे यहाँ आप देखिए नियम का बहुत ही ज़्यादा पालना होती है। प्लस भगवान के श्रृंगार अभी आप लोग सब सावधानी होके बस बैठे रहिए, कीर्तन सुनते रहिए। श्रृंगार का बहुत बढ़िया दर्शन आप लोगों को मिलेगा और भगवान शंकर जी सबको जो है ब्लेसिंग करेंगे। तो आप लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, यही भगवान के लिए बहुत कुछ है। ओम नमः शिवाय जाप करते रहें मन मन में। और बच्चे कीर्तन गा रहे हैं, आप लोग ध्यान से मग्न होकर के कीर्तन श्रवण करें। ठाकुर जी कभी बहुत सारा धन का और या तो बहुत सारा सामान का कोई लोभ नहीं होता ठाकुर जी को। ठाकुर जी को जो आपके प्रेम का भूखा है भगवान, कोई द्रव्य का या कोई सामान का भोग का ऐसा नहीं है। जो आपकी श्रद्धा हो वो आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। मंदिर सब ठाकुर जी जो है मांगते नहीं है, लेकिन उनकी भी आवश्यकता तो होती है। इतने बड़ा मंदिर चलता है, सब डोनेशन से ही चलता है, ये भी जरूरी है। प्लस भगवान की मेन चीज़ है दर्शन। दर्शन शुद्ध भाव से करिए, यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई खिंचातानी नहीं है और बाकी मंदिरों की तरह कोई डिमांड है नहीं। तो आप लोग इसी तरह हमेशा आएँ और ठाकुर जी का दर्शन करें। भगवान की जो है दिव्य दृष्टि आप और हम सब के ऊपर पड़ेगा, ये भगवान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। बोलिए भगवान शंकर की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। अगले हफ्ते 30 तारीख से हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा बाहर फील्ड में होने जा रहा है, वहाँ सब टेंट की व्यवस्था सब कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक आप लोग सब पधारें और टेलीविज़न के माध्यम से तो आप देखते ही हैं और सामने होकर के दर्शन करें और भगवान का कथा, दिव्य कथा का श्रवण करें। शाम को 7 से 9 बजे तक कथा है। तो अधिक से अधिक विशेष करके वैष्णव जी वाले भक्त तो सब आते ही हैं, हिंदुस्तान वालों को मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि सब लोग आया करें। सुबह भी आइए, दर्शन करिए, शाम को भी आइए। बहुत अच्छा, ठाकुर जी की प्रतिमा बहुत अच्छी है और शुद्ध वातावरण है, तो आप लोगों को मन लगेगा। अधिक से अधिक आकर के भागवत श्रवण करें और ठाकुर जी का दर्शन भी नित्य नियम से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवादिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरम शिवम सत्यम सुंदरम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वर दयानिधि दानेश्वर जय जटाधर अभयंकरा जय जटाधर अभयंकरा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शूलपाणि त्रिशूलधारी औघरी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनयन विश्वनाथ विशंबरा विश्वनाथ विशंबरा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभीष्वता महादेव महाभोले सदा शिव शिव शंकरा सदा शिव शिव शंकरा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जय जय जयति जगदीश्वरा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर
चन्द्रमौळि चिदम्बरा कोटि कोटि प्रणाम शम्भो कोटि नमन दिगम्बरा कोटि नमन दिगम्बरा ॐ नमः शिवाय ॐ नमः बोले शंकर भगवान की जय। बोले मापति महादेव की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। So nice to see so many of you today. Welcome to our Shraavan सोमवार पूजा। हमारे भवानी शंकर मंदिर की ओर से हम सबका स्वागत है। And today is a very special day for Hindus in the month of Shraavan. On Panchami Tithi, on the 5th day of the bright half of Shukla Paksh in the month of Shraavan, we experience something called Nag Panchami, and 2 days after we experience something called Tulasi Saptami. Today, Nag Panchami. We'll talk a little bit about snakes today. तो अगर नाग को बहुत पसंद है, if you like snakes, you will enjoy today's story. And if you don't like snakes, by the end of the story, you will like it. But please don't run away, because we want all of you here. Very happy Naga Panchami to all, and so nice to see you, all of you here this evening to witness this puja. As Pandit Shekhar said earlier, with such, beautiful delivery, it was a nice Abhishekam that we all witnessed with the chanting of the Vedic mantras. There is nothing more powerful than the chanting of Veda mantra. Nothing more powerful than that. What does the Vedas say about Rudra Puja? In the Stula Samhita of the Rig Veda, what does it say? Vrikshasya moola seke nashakha pushyanti vayataha shive rudre japa priti priyatam yasya devata. Every Shraavan I quote this verse, not from the Puran or the Ramayana. This is from Stula Samhita of the Veda. Vrikshasya moola sekena sakha. What does it say? That you don't have to throw water. You don't have to throw water separately on the flowers of the tree, or the leaves of the tree, or the stem of the tree. You have to throw water on the root of the tree.
the root of this entire creation. Shive Rudre Jape Priti. The entire root of this creation is Bhagwan Rudra, Bhagwan Shivji. Therefore, Shive Rudre Jape Priti, those who do Rudra Abhishekam. Let me please explain to you, Rudra Abhishekam is not throwing milk and saying Trambakam Yajamahe, or is that not just milk and saying Om Namah Shivaya. Rudra Abhishekam is invoking the Vedic mantras of Rudradev and doing Abhishekam. Shive Rudre Jape Priti Priyatam Yasya Devata. When you worship Shivji in the form of Rudra, all the devatas are happy. Priyatam Yasya Devata. All the devatas are happy. He's the root of this creation. Therefore, it is so nice to see all of us chanting and praying this evening. Next week, Monday, is going to be a very magical one. It's the last Monday in Shraavan, and I'll tell you a little bit about that. But for now, let us chant the Shivji Chalisa, as we do every week, and we ask Bhagwan Shivji's blessings. Please, in your own way, if you have the copy, you can sing with us. If not, just clasp your hands and sing with us Shivji Chalisa. बोले शंकर भगवान की जय। अभी हम शिवजी चालीसा पाठ करें तो जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देवो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बालचंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फलीके अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल कर चार लगाए वस्त्र काल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना माधु के हवे दुलारे वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि धारी करत सदा जैसे कार्तिक शाम और गणराम या छवि को कहीं जात जीवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरंत शरारण आप पधारो लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा सुरक्षित तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए सब ही कृपा कर लेन बचाए। दिया कपहि भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञता सुपुरारी। दानिन मह तुम सबको नाही सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाए अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय निहारा। दीन दया करि सहाय
रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारे, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूरन जह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न किए चितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करते कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि रे नाथ पुकारो, यदि अवसर मोहि आन उबारो। त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछते नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। निर्धन को देख सदाई, जो कोई जाचे सो बल पाई। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होते हैं शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाप करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर होई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ज्ञान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतकाल शिवपुर में आवे। करे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारे। जानी सकल दुख हरहु हमारे, जानी सकल दुख हरहु हमारे। नित्य नेम कर प्रात ही पात करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण कीन कल्याण। मगसर छति है मंत्र ऋतु, 64 योगिनी ज्ञान। पात 40 वही पूर्ण कीन कल्याण। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्राष्टकम।
नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजे. Everybody, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Nirakar Omkar Moolam Turiyam Gira Jnana Koti Pramisham Girisham Karalam Mahakalam Kripalam Gunagar Sansar Param Natoham. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Tusharadrisham Kashigoram Gambhiram Manobhut Koti Prabha Shri Shariram Suran Maulikallo Giri Charuganga Lasat Vale Vale Kante Bhujanga. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Chalat kundalam bhru sunetram vishalam Prasannanam Neelakantam Dayalam Mrigadisha Charma Param Mandamalam Priyam Shankaram Sarvanatham Bhajami. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Prachandam prakrishtam pragalbham paresham akhandam majam bhavukoti prakasham prayashula nirmolanam shulapanim bhajeham bhavani bhavagamyam. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Kalatik Kalyan Kalpatkari Sada Sajjananand Ratha Purari Sridananda Sangho Moha Pahari Prasidha Prasidha Namo Manmatari. Everybody. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Nayavat Umanath Padar Vindam Bhajanti Haloke Pare Vanaranam Natavat Sukham Shanti Santapanasham Prasidha Prabhu Sarvabhutanivasa. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Na janami yogam japam naiva pujam na toham sada sarvada shambhutobhyam. Jara janma dukho vyatatramanam Prabhu pahiyavam namami shambho. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Har 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 Mahadev. Om Namah Shivaya. 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 Shambho. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
ॐ नमः शिवाय 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 दक्षिण ॐ नमः शिवाय 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ नमः शिवाय 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 बोलो ॐ नमः शिवाय 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 आत्मा त्वं गिरिजामति सहचर प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोगर्चना निद्रा समाधिस्तति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वगिरा यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तव आराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रावणनयनजं वा मानसं वा पराधं
विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हर हर महादेवा, हर हर महादेवा। महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो। हर हर शिव शंभो, 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 हर हर शिव शंभो। सांब सदाशिवाय नमः, महादेवाय नमः, भवानी शंकर शिवाय नमः। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। भवानी शंकर भगवान की, अन्नपूर्ण माता की, पार्वती माता की, श्री कार्तिकेय सुब्रह्मण्य स्वामी की, गणपति भगवान की, नागराज भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। हे महादेव शंभो। This is so beautiful this evening. Please return back to your seats, everyone. Thank you. भगवान जी का श्रृंगार बहुत अच्छा है, सुंदर है भगवान जी का श्रृंगार। ओम शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओ शिवाय गौरी वदनारविन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओ वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Everybody, सभी को शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओ हर 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 महादेवा 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 बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अरे ओम नमः शिवाय 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 together ओम नमः शिवाय everybody again Om Namah Shivaya. Raise your voices, everybody. Let there be vibrations.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Just a tip. Take one tip. Take a deep breath before you say Om Namah Shivaya, and as you're saying it, let the oxygen come out of your mouth. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Sabhi ko. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Bole Shankar Bhagwan ki. Shubh Naga Panchami. Wishing all of you a blessed Naga Panchami. Today, in some parts of India, special puja is done to the snakes. The snakes are fed, and puja is done to them. Honey and milk is given to the cobras. I would like you to know, I did that once in my life as well. 2 live cobras, 1 male or 1 female. The male one was very big. It's on video, by the way. And a female one was very little. We did this in South India. They know how this thing works. They're there in front of them, and the Panditjis artiing them at camphor. When you arti them, go back and forth like this. And then you take the milk and the honey, you put it in the mouth, in your hand like this. And when you go like this, they go. They open their mouth like that. And you feed them. And after you're done, you have to give them dakshina too. Yeah, Naga Puja. Or uske baad, when you finish arti them and so, you bow down, and then they're like this. When you bow down, they raise up like this. And they give you Ashirvad. Now mind you, when I bow down, I was just looking up too. Just to make sure that they're not biting. But it's beautiful. Today in many parts of India, Naga Panchami is observed and Nagaraj Puja is done. Snakes in Hinduism it's not symbolic, it's very meaningful for us. Well, when we look at 2 of our main deities, Bhagwan Shivji and Bhagwan Vishnu, we can see them associating with snakes. Even Ganesha, his belt is a snake. Today, there is one shloka that we chant on Naga Panchami. What is it? Anantam Vasukim Shesham. This is identifying the 9 snakes, the 9 powerful snakes of the Hindus. Anantam Vasukim Shesham Padmanabham Chakambalam Shankhapalam Dhritarashtram Cha Takshakam Kaliyam Tatha Etani Navanamani Naganama Cha Mahatmana Sayam Kale Pathe Nityam Pratakale Visheshatah Tasya Vishwa Bhayam Nasti Sarvatra Vijayo Bhavet. What is this saying? That we reverently, with reverence,
Anantam, with reverence we invoke the 9 powerful snakes documented in the Hindu scriptures. Who are they? Ananta, Vasuki, Shesha, Padmanabha, Kambala, Shankapala, Dhritarashtra, Takshaka, and Kaliya. The 9 most powerful snakes documented in our scriptures, all of them have a purpose. We bow to these 9 snakes. And what is it saying here? If prayed to on this day, if the shloka is chanted and reverence is given to the Nagas on this day, they will keep one protected from all evils and they become victorious in life. In many parts of India, the snakes, they pray to them so that they may protect the people living in the villages. No? They protect the people living in the villages. The snakes are accustomed to the people living there. When thieves come, strangers come, they protect the people from them. Snake. The 2 most famous snakes we know of in Hinduism are, the first one is called Ananta or Shesha. No, the sloka says, Ananta Vasuki Shesham. Ananta or Shesha is the snake associated with Lord Vishnu. When you see the 1,000-headed, that is Shesh Bhagavan or Ananta. That's the name of his snake. And Sheshnag is so powerful, it is said that the earth sits on his head. And he's so powerful that when the earth sits on his head, it feels like a mustard seed sitting on his head. So powerful he is. We can't talk about all of them, but the next one I think we can all relate to is Vasuki. Ananta Vasukim Shesham Padmanabham Chakambalam. Vasuki is the snake around Shivji's neck. That's his name, eh? Not Cobra and Black Snake. Vasuki is his name, right? Name is Vasuki. So how did Vasuki come about? Vasuki, of course, he's the sibling of Adishesh, Ananta. He was a devotee of Shivji. A snake was a devotee of Mahadev. There's a beautiful story in the Shiv Mahapuran, in Satrudra Samhita, that talks about the churning of the ocean. Churning of the ocean. जो हमारे West Indies लोग, you know, just like you have a dal in your home, dal, पता नहीं हमारे भारतीय लोग इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है. हम बोलते हैं दाल गोतनी. पंडित जी, ये क्या है? जब दाल ऐसे करो, सो ये क्या है? रई. और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? वो, अरे, रई. रई, अच्छा, रई. तो हम कहते हैं घोते दाल. So we know it is ghote, dal gotni. So when you want the essence of the dal to come up on top, and you know that's very important because when you drink dal, you grow tal, right? It's too late for some of y'all. So you have to ghote the dal like this for the essence of it all to come up. Similarly, what happened? There was nectar beneath the ocean. There's a beautiful katha in Bhagavatam and also in Shiv Puran. And all the demons came together, but they couldn't do it alone because they have to churn the ocean. So they brought the devatas together and they have to churn the ocean. But how are they going to rai? How are they going to churn? How are they going to gote? They have to get a mountain. So they bring the Mandar mountain, the huge mountain. But they say, wait, we cannot put the mountain, it will erode the base of the ocean. So Bhagwan Ji came, Narayan came as Kurma avatar, the turtle. And he sat beneath the ocean, the mountain went on top. And they say, wait, we have to, go to him with something. So they brought the great devotee of Shivji, called Vasuki the snake. Because they know inside the ocean, there is not only nectar, there are lots of things more. They said that, listen,
Coming out of this ocean will be nectar, and coming out of this ocean will be poison as well. So their plan was, they're going to drink the nectar, and the snake is going to drink the poison. That was their plan. So they brought the great bhakt of Shivaji Bhagwan called Vasuki, the snake, and they wrapped him around like this, and they were just churning, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. तथा समाभ्यदाशंको शंकरो भक्तवत्सला धग्रे शिवसो सद्गम विभो शरणागतम अधागत सदा राहो सुष्टावा सुप्रपानतुम शंकरम सकलाधीशा भाभीरस्तारदूषणम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Om Namah Shivaya, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. They brought the snake and they put it around the mountain and they started to churn the ocean. The intent is to get nectar. But as I've always told you, if you go deep inside of you, nectar of the ocean has to do with churning the self. If you and me, all of us without exception, we go deep inside of us. हमारे अंतर में क्या है? हमारे अंदर में क्या है? हमारे हृदय में सुबुद्धि और खुबुद्धि में रहते हैं. हमारे हृदय में विष और अमृत भी रहते हैं. Inside of us, there is vish, there is poison, and there is nectar living inside of every one of us. Swami Vivekananda has said, the only time we are not conscious of the poison in us, or the anger or the ego in us, is when we lay down flat on the pyre and we're about to be burned. That's the only time we're not, aware of it. But all the time it's there. हमारे हृदय में विष है और हमारे हृदय में भी अमृत है. Nectar and poison are both residing in the heart. If nectar and poison are residing inside of you, now you have to go through this process. This samudra manthan, this churning of the ocean. When you go inside and you discover, you're going to discover amrit, but you're going to discover poison as well. That is why Naga Panchami is about feeding the snakes, but it is also about going inside. Reflect inside. In the yogic culture, in yoga, yoga has 8 branches called Ashtanga Yoga. But that's not for today. In one of the processes of yoga, there's something called Kundalini Shakti. Kundalini, it is said, is at the base of the spine, there is a sleeping snake. This is not Nancy's story. This is our Satya Sanatan Dharma. Those of you who do Ashtanga Yoga, I'm not talking about Hatha Yoga, I'm talking about Ashtanga, the pure yoga. You will know if you study. Ashtanga Yoga tells you at the base of the spine there is the Kundalini Shakti, which means the coiled serpent. And how are we going to awaken the coiled serpent? You don't want that snake to be sleeping. You want it to wake and stretch and exit. So how do you do it? You do sadhana. First,
Tvam Mooladhara Statosi Nityam. We have to do sadhana to Ganesha for Mooladhara Chakra, the root chakra. Then we go to Swadhisthana, the second chakra. Then Manipura, the third chakra. Then Anahata, the fourth chakra. Then Vishuddhi, the fifth chakra. Then Agni chakra, the sixth one. And then the seventh one above the head. When we practice meditation and sadhana every day in our life, mantra japam, gayatri japam, all these things, the coil snake, the kundalini, awakens from the base of the spine and comes straight. And then when it exits the body, that is when it is said we gain nirvana or realization. People who do yoga, that is the goal of their life. It is said as well, for that to happen, we have to practice sadhana for minimum 7 lifetimes to open one of our chakras. Today people are opening chakras all over the place. No. Weekend chakras and all this. You have to practice many lifetimes of sadhana and tapasya to have nirvana. This is the sleeping serpent in the yogic culture. But this is also the snake that we're talking about. To awaken the nectar in you and to let go of the poison. And don't let's make mistake and ignore that we don't have any poison. It is there. We are all nice people, the nicest people ever. And we are doing our best every day to keep the poisonous things down. And I think we're doing a good job at it. Don't let it spill though. So they start to churn the ocean. They're churning the ocean. Nectar came out. Everybody happy? Everybody knows what to do with nectar. They drink nectar. But he's immortal now. There was one by the name of Rahu, a demon. He drank the nectar. But when he drank the nectar passed his neck. Bhagwan Vishnu saw him and Bhagwan Vishnu cut out his head. But he lived because the nectar went into his body. Today he's a Graha, Rahu Graha. We pray to a headless Graha. But he's powerful too. So when the poison came out now, halahal was it's not about the taste. Just being next to it, the heat of it destroys you. Vasuki turns around and Vasuki starts to drink the poison, the snake. But even Vasuki could not contain or consume all the poison that was there. Everybody then went to Shivji. I think you know this part of the story, where everybody went to Shivji and they prayed to Mahadev. And Vasuki, the snake, was in so much pain, he himself threw his head at the feet of the Lord Shivji Bhagwan. The poison is now going to take over the world. Nagadevata Trahima Pahima हे विष्णु को सया पे सुजाने वाला, हे शंकर के गले को सजाने वाला, नाग देवता त्राही मां पाही मां, नाग देवता त्राही मां पाही मां, हे विष्णु को सजा पे सुजाने वाला, हे शंकर के गले से लगाने वाला, नाग देवता त्राही मां पाही मां, नाग देवता त्राही मां पाही मां। शंभो कोमल कोमल अंग तिहारा, कोमल कोमल अंग तिहारा, श्याम रंग तोरे नागे प्यारा, झिलमिल झिलमिल जाए तिहारा, जैसे यमुना जल की धारा।
हजारों बजाने वाले, हे शीश पे धरती को उठाने वाले, नाग देवता त्राहि मां पाहि मां, नाग देवता त्राहि मां पाहि मां। सोए बालक रोए माता, सोए बालक रोए माता, ये कैसा अन्याय विधाता, ये बालक है तुम पालक हो, प्राणदान जो जीवन दाता। हे विश्व अमृत को खिलाने वाले, हे भक्तों की लाज बचाने वाले, नाग देवता त्राहि मां पाहि मां, नाग देवता त्राहि मां पाहि मां। नाग देवता, नाग देवता, नाग देवता। बोले नाग देवता भगवान की। भगवान शिव ji heard the praises, and when the Vasuki, the snake, placed his head at his feet, and everybody, all the devatas, Brahma, Vishnu, everybody came to Shiv ji. Look, poison is destroying this world. Bhagwan Shiv ji take a shank, a huge one, and he placed all the poison and he drank it. Kabhi kabhi hum sochte hain, sometimes we think that Shankar and Shiva are not associated. They are very much associated. And so he drank the poison from the Shankar. I've told you this story many times before. Parvati Mata saw him drinking the poison, and just like a good caring person will do, they will not want to see someone good taking poison. Parvati Mata entered the mouth of Shivji and blocked his throat so that the poison would not enter. From that day he became Neelakanta Bhagwan. And then when Bhagwan Shivji looked at Vasuki, the snake, struggling because he consumed the poisonous halahal, struggling at his feet, he picked up Vasuki. And he said, such a great devotee of mine is snake. Doesn't deserve to serve demons, doesn't deserve to serve the devatas even. Such devotee of mine, who was willing to give up his life for this world, deserves to be close to me. And that is when he took Vasuki, placed it around his neck. Bole Shankar Bhagavan ki. All the devatas now, when this happened, they all went back and they started to boast. Brahma says, you see, this creation that I created, oh, it is so beautiful. I only could have made this happen. Vishnu Bhagavan started to boast. All the devatas started to boast. And there's a katha in the Shiv Mahapuran that talks about the Yaksheshwar form of the Lord. While the host of devatas assembled and they were boasting how each other, you know, when something bad happens, when something good happens rather, everyone wants to take credit for it. But when something not so good happens, a few will be there. Good thing happened, everybody is taking credit, this devata, that devata. Shankar Bhagwan took a form as Yaksheshwar. This is Yaksheshwar Roop of the Lord. And he appeared in front, between all of them. They didn't recognize him. And what did he say? Garva me naam tu kurutam, karta hartar para prabhu, vritsmritaksha maheshanam, katayadham vrita balaha. He said, none of you should be so arrogant. None of you should be so arrogant to take credit for something that you did not do, right? There's a lot in the world that do that. We take credit for something we didn't do or we didn't contribute to. He says, none of you should do that. That's arrogance. And he says, what he says, there is some other Bhagwan, some other greater force who happens to be
the cause of your celebration here today. Why aren't you thanking him? In your pride, have you forgotten Shiva? Katayadhvam vrita balaha. Bhagwan Shiv ko bhul. Have you forgotten Bhagwan Shivji? And they all looked at him now. Who are you? They're after all the God now. He said, in case you are really proud of your strength, I'm going to put all of you to a test. All of them came up now. What test? Bhagwan Shivji in Yaksheshwar form took a single blade of grass. A single blade of grass. And he says, if any one of you can break this blade of grass, I will consider you greater than Shivji. All of them came. Atha sarve sura vishnur pramukha viramanina kritva swapautram tatram swayuthani vichikshapuhu. All the devatas, including Vishnu, they came and they could consider themselves to be strong. They were trying to break a single blade of grass. A single blade of grass that Yaksheshwar Bhagwan gave to them. And none of them couldn't have broken it. What happened when all of them tried and failed? Athasi tu nabhovani deva visyam harini yakshosham shankaro deva sarvagarva paharakaha. The voice from the heavens came and told them, Yakshosham shankaro deva. All of you fools, this yaksha that is putting you to the test, he is no other than Shankar Bhagwan, than Shivji. Why are you all taking credit for his work? His neck is now deformed because of you, and you're taking credit for his work. And when the voice, my friends, said that, it said again that all of you are influenced with Maya. Asya Maya Prabhavade Mohinam Saprabhum Shivam. All of you have been influenced by Maya, by illusion. You see something good happened, you're part of it, and all of you are taking credit for it. But none of you could know about the real power behind it. It is Mahadev himself. They all looked at the Yaksheshwar, at the person, and then Mahadev Bhagwan, from the Yaksha form, he transformed himself and he became Shiva. And all of them at that point in time bowed to Mahadev. Deva Deva Mahadeva Sarva Garbha Vapahara Yaksheshwar Mahalila Maya Te Yuddhata Prabhu. He Deva Deva Mahadeva Sarva Garbha Parahara. Deva, O God of the gods, Mahadev, we bow to you again and again. O Yaksheshwar, O Bhagwan, O performer of the great sports, please, as of today, ensure that there is no Maya, in our eyes, so we can always realize how great you are. Maya is a very dangerous thing in this age of Kali Yuga. It makes everything look real. It made everything look shiny and nice. But in the reality, there is something behind it that you can see and observe. Bhagwan, they prayed, Hey Prabhu, take away this Maya from our lives and let us forever recognize who you are. And when they prayed, Bhagwan Shivji blessed all of them. There's a very beautiful quote. I was watching a Korean TV series, and there was a Buddhist monk in there, and in the second to the last episode, he gave everyone an advice. And you know what he said? He said, what you see isn't everything. What you see isn't everything. Don't be blinded by what you can see. Keep in mind the essence of what lies beyond what you see. It's a very profound and powerful, it's from a Buddhist monk. And I translated to Hindi a little bit so that everybody can have a little benefit. आप जो देखते हैं,
आप जो देखते हैं वहां सब कुछ नहीं है। आप जो देख सकते हैं उसके अंधे मत हो जाइए ना, उसे मत हो जाए, उसे पर जो कुछ है उसका सार ध्यान में रखें। What you see isn't everything, and don't be blinded by what you see. Don't be blinded by what you see. We have to look beyond the surface level. You see the gold snake? Everybody see the gold snake? Everybody see the gold snake? Please answer me. Have you seen the gold snake? But it's not a gold snake. How can you see a gold snake? Right? Good. Anyways, I know it's a trick question. Don't be blinded by what you see. Keep in mind the essence of what lies beyond what you see. You see a person giving you a nice, bright, smiley face. You don't know what is going on in their life. You see nice things around you. Don't be blinded by them. Beyond that is something that is more profound, something that is deeper, something that is more meaningful. I tell a lot of my young children this. They're growing up now, and we have to be careful with them as well. I tell them all the time, don't be fooled by what you see, because today an attraction is what brings people together, physical attraction. Don't be fooled by that. We are all searching for our soul mate. Have you ever seen the soul? Have you ever seen the soul? You haven't seen the soul, right? But we are body judging people. Them short, he long, he square, he wrong, whatever it is, we're judging people. How kind of shape we give people? But yet we are searching for our soul mate. We have to look beyond what we can see, because beyond what we can see, there is something more profound, something more real, which is all that matters in life. Today's Yaksheshwar Katha is to tell you that there are two choices in life. We can consume poisonous things, or we can consume nectar-like things. Please choose to consume nectar. Secondly, Mahadev Bhagwan will be there with you at every stage of your life. There is no time when he will not be there. Third, please, don't be blinded by Maya. Don't be blinded by illusion. Everything that you see, Adi Shankara tells, I promise to do it. These kids are asking me about his Katha study. Maybe this week I'll do it. Adi Shankaracharya had the greatest debate of his life. You know what he tells the couple, the married couple? He said, everything that you see is unreal. He said, and the couple says, what do you mean? He says, the only thing that is real is God. The couple says, wait a minute. You're telling me my wife is unreal, I can see her. You're telling me this bottle is unreal, I can see it, I can touch it. You're telling me that God is real, I can't see God. And he says, you're telling me to believe that all I can see is unreal, but what I can't see is real. What is this? Adi Shankaracharya says, well, you can see your shadow. Is your shadow real? Right? You can see your shadow. Is that real? Can you touch it? It's not real. It's an illusion. You can see fire or heat in the desert. But is it real? It's not real. Not everything your eyes see or perceives is real. So what we have to do is, Prabhu, we don't know anything. We have to go to his feet. My prayer to all of you today, my approach in this beautiful evening, is to always give your life to Mahadev. Give your life to him. Give your life to him. Yesterday morning, we had a beautiful satsang. A lot of young people were here. And I told them about a conversation we had with young people here. I said to them that, a few weeks ago was Karibana. It was an interesting discussion. A few years ago, Karibana, and I meddle with the young people. I talk to them a lot. I listen to them because you have to, otherwise they're going to talk to somebody else. So they come in here. A lot of young Indian students are here. So they ask me, Pandit ji, aap kahan se hai? Main West Indies se hu. So Pandit ji, aap
Karibana ja rahe hai. Are you going to Karibana? I said, nahi. I'm not going to Karibana. I've never been to Karibana. So some other kids came in and they were talking about it. We're talking. You have to listen. You have to have a conversation. So I said, tell me what goes on. There's a Pranaji, there is floats, there is decoration, and all these kinds of things. I said, what else? They say there's costume. You get to dress up. I said, wow, very nice. And I said, what else? There's music. You dance all day. I said, good. I said, what happens after that? He said, when the weekend done, Karibana done. I said, good. I want to be very public about it. I have no judgment about people, what you do in your life. That's your choice. You live whatever life you want. So I tell them, listen, here is my take on it. You have floats and decor. I have that here too. I have that 365 days a year. You have costume. I have costume too. I like my costume. I mean, it's simple, but it's nice. You have music and you're dancing. I have music and I'm dancing too. You know what's the difference between a Caribana weekend and a temple? Is yours will last for 3 days. Mine will last for a lifetime. Every day I get to experience the joy that you're experiencing. You're only experiencing one weekend. I experience it every day. Listen, I can't tell you what life to live. We got to stop doing that. I can just tell you the bliss I receive and I enjoy by doing what I do. And anybody you ask who serve in this temple, I mean the people who wipe out, the people who sweep out, people who take out garbage, you ask them. They do it joyfully and blissfully. Because whatever you do in front of God, it brings you lots of joy. Lots and lots of joy. This is a happiness at the feet of Shankara Bhagwan that we cannot get over a weekend. This will never go away. This is perennial joy and perennial happiness. So thankful to see so many of you, especially our Bharatiya भाई और बहनों. आप सबको स्वागत है हमारे भवानी शंकर मंदिर में. हम इतनी खुश हैं कि आज आप हमारे पास हैं, आप हमारे साथ हैं इस पवित्र सोमवार, श्रावण सोमवार में. To all of you, thank you so much for coming out. And before I go, I would like to, well, I'm not going anywhere. Before I end, I would like to acknowledge our sponsors for today and thank them very much for their sponsorship. Today, we have many virtual sponsors. The Ramlochan family from New Jersey, Lalita ji and family, the Ramlochan family, Ram, Lalita and Dayan, giving thanks to Bhagwan Shivji and Ma Parvati for their continued guidance and blessings. Also wishing my brother Ricky Silal a very happy birthday today from all of us. So thank you very much to the Ramlochan family for always supporting our temple and for sponsoring today as well. Jaipal and Delini Narayan, they're giving thanks today for many blessings as we celebrate their 60th wedding anniversary. Thank you very much. Please let's clap for them. Clap for them, please. Happy anniversary to both of you. And may Bhagwan bless you with many more lifetime of love. Blessings to my dear brother, Sodra Maharaj in Trinidad, wishing you health, strength, happiness, and Bhagwan's blessings with lots of love. Also, in honor of my dear father, Chanka Maharaj, may you be one with the Lord, and may you continue to bless mom and all your children and grandchildren with boundless love from your daughter, Vedya, and family. Happy 56th wedding anniversary to our parents, Eric and Shirley Raj Bahadur, from your children, Vidya, Indira, Nadira, and Mala, your grandchildren and loved ones. May Bhagwan bless you. Sincere thanks today as well to Drupati Punai for sponsoring, and also from Babita Singh for being a virtual sponsor, to Auntie Daris and Uncle Balkisun. Today is the Auntie Daris birthday. Happy birthday to you, Auntie Daris. Bhagwan's blessings to you always. And God will bless you with long life, health, and happiness. She is a senior of our temple and is always present for prayers.
Thank you for sponsoring, and happy birthday to you again. Bhagwan's blessings. Today as well, Sita Partab giving thanks and gratitude to Bhagwan for all the goodness, kindness, and blessings that have been bestowed on them and their family. They're also thanking BSM team for a wonderful job. Thank you very much, Sita Partab. To Sirani Sukhdev, thanking Bhagwan Shivji and thanking Bhavani Shankar Mandir as well. Thank you very much, Sirani Sukhdev. From Vedya, Bihari Lal, blessings to my dear mother, Sodra Maharaj in Trinidad. I think we got that already. I know it's a different, anyway. Wishing Mataji Sodra Maharaj in Trinidad a happy birthday. Bhagwan's blessings always. Geeta Lajja Budram, Mitra Budram, Ravina Budram, Sai Sonia Budram, Pushkar, Deshpande, Kamlavati Budram, Gopal Bhan, Mohanlal Budram, Merlin Budram. Thank you very much. Bhagwan's blessings. And in loving memory of our daddy and Nana, Uncle Laidi, this is from Annie and her family. Annie, who is a volunteer here. You are the best husband, Daddy and Nana. It has been 14 long years since you left. We miss you dearly. And of course, may you enjoy Bhagwan Shri Krishna's abode from your wife, Auntie Pala, children Annie, Jenny, Joan, Janice, your son-in-laws, Ravi, Azad, Alston, and Anand, and your 10 grandchildren, Anaya, Runa, Amira, Aditya, Avish, Ashna, Anish, Yadvi, Panita, and Avni. We love you, and may his Atma always be in peace. God bless Uncle Laidi. In person today, we have Lakshmi and Dara and their family. Bhagwan's blessings to them always. This is their 7th consecutive week as Shrota. May the Lord always guide them and protect them. And also Sarah Rampatab from Florida. She's a lovely girl who I know, Kita's daughter. She's giving thanks to Bhagwan Shiva for his continuous guidance and inspiration and blessings. And I know she's starting a new school tomorrow, pharmacy school. So we want to wish her all the best. Congratulations, Sarah. And her Nani is here today, Auntie Shirley. And her Mosi Sati is here, aunt, to give thanks to Bhagwan on her behalf. Thank you very much, Sarah. God bless you. And also, today is Sandy's birthday. Happy birthday to our loving wife, mother, wishing you long life and great health, lots of happiness and blessings of Ma Durga and Lord Shiva. And this is coming from Devendra, Yogendra, Richard, your mom and your dad. Sandra is sitting right here today. Happy birthday to you. God blessings. Please clap for her, everybody. They're wonderful volunteers of our temple as well. So God bless them always with health and strength so that they can continue to help us. And finally, last but not least, Vrinda Ashwar. Yesterday, August 20th, she celebrated her 20th birthday. So please give her a big hand. Yeah. So she was busy yesterday because of exam time and so, but she wasn't able to sit. But we'd like to wish you happy birthday, Vrind, on behalf of all of us. You literally grew up with all these people. And I usually don't, say a lot about my own kids, but Vrinda is an amazing young woman. I can't believe I'm the daddy of a 20-year-old girl, but that's fine. 20 years ago, she was born on Janmashtami, and she brought so much of joy and happiness in our life. We couldn't have asked for a better daughter, a more obedient one, at least up to now. We can only pray that Bhagwan will continue to guide her, to do all the good things she wants to do. She's a really key person in the whole temple setup, in the technology side of things, and we value her presence here so much. Happy birthday, Vrind. God bless you always. We love you lots. We have some announcements to make. We'll do that afterwards. I'll ask one of the boys to do that. But in the meantime, let's all get up now, and you can go take your darshan to Bhagwan Shiva and Parvati. Bring your prasad, your flowers, your dakshina, whatever you have. They shouldn't take more about 10 minutes or so. We have 2 lines so that everybody can perform that, and we go to Aarti afterwards. Bole Shankar Bhagavan ki Jai.
जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर बोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर बोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर बोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर बोले अंग विभूति जटा में गंगा अंग विभूति जटा में गंगा खले राग दोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर बोले ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय कर त्रिशूल मृगे चाल पहने कर त्रिशूल मृगे चाल पहने त्रिनेत्रधारी बालचंद्र यद्यमंगे बालचंद्र यद्यमंगे बंगरंग गोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर बोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर बोले ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय महादेव शंकर विश्वरंबरे महादेव शंकर विश्वरंबरे नीलकंठधारी वृंदमान है पृथ्वी चंदे वृंदमान है पृथ्वी चंदे तम तमरो बोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर बोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर बोले अंग विभूति जटा में गंगा अंग विभूति जटा में गंगा गले राग दोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर बोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर बोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर बोले जय शंकर बोले जय शंकर बोले Shiva bam bam bam, Shiva bam bam bam, Shiva bam bam bam, bola bajaye ramaru. Shiva bam bam bam, bola bajaye ramaru. Bajaye ramaru, Shiva bajaye ramaru. Bajaye ramaru, Shiva bajaye ramaru. Bajaye ramaru, Shiva bajaye ramaru. Shiva bam bam bam, Shiva bam bam bam, Shiva bam bam bam, bola bajaye ramaru. Shiva bam bam bam, bola bajaye ramaru. अंजन को आंख देते गोरियन को काया 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 बाजन को पत्र देते निरंजन को माय शिवा बम 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 शिवा बम बम शिवा बम 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 बोला बजाए रमरू शिवा बम 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 बोला बजाए रमरू बजाए रमरू शिव बजाए रमरू बजाए रमरू शिव बजाए रमरू बजाए रमरू शिव बजाए रमरू शिव बम 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 शिव बम बम शिव बम 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 बोला बजाए रमरू शिव बम 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 बोला बजाए रमरू कोई चढ़ावे बाण बोले कोई चढ़ावे
कोई चढ़ावे माला, कोई चढ़ावे मान फूल, कोई चढ़ावे माला, कोई चढ़ावे मान फूल, कोई चढ़ावे माला, कोई चढ़ावे बेला पत्र, कोई चढ़ावे मेवा। शिव बम बम शिव बम बम शिव बम बम बोला बजाए डमरू, शिव बम बम बोला बजाए डमरू, बजाए डमरू शिव बजाए डमरू, बजाए डमरू शिव बजाए डमरू, बजाए डमरू शिव बजाए डमरू। शिव बम 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 शिव बम 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 शिव बम बम बोला बजाए डमरू, शिव बम बम बोला बजाए डमरू। कोई गावे विश्वनाथ, कोई गावे काशीनाथ, 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 कोई गावा बोले बाबा वही भोलेनाथ। शिव बम 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 शिव बम 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 शिव बम 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 बोला बजाए डमरू, शिव बम 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 बोला बजाए डमरू, बजाए डमरू शिव बजाए डमरू, बजाए डमरू शिव बजाए डमरू, बजाए डमरू शिव बजाए डमरू। शिव बम 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 शिव बम 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 शिव बम 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 बोला बजाए डमरू, शिव बम 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 बोला बजाए डमरू, शिव बम 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 बोला बजाए डमरू। दया करो शिव गंगाधारी, दया करो शिव गंगाधारी, कृपा करो शिव हे त्रिपुरारी, कृपा करो शिव हे त्रिपुरारी, दया करो शिव गंगाधारी। नाम मधुर शुभ मंगलकारी, नाम मधुर शुभ मंगलकारी, अलक निरंजन त्रिशूलधारी, अलक निरंजन त्रिशूलधारी, दया करो कृपा करो रक्षा करो भोला भंडारी, दया करो शिव गंगाधारी, दया करो शिव गंगाधारी, कृपा करो शिव हे त्रिपुरारी, कृपा करो शिव हे त्रिपुरारी, दया करो शिव गंगाधारी, दया करो शिव गंगाधारी, दया करो शिव गंगाधारी, दया करो दया करो दया करो शिव गंगाधारी। प्रेम से बोलो भवानी शंकर भगवान की जय।
Sitaram, everyone. Before we stand for Aarti, just a couple of announcements. First and foremost, we'd like to thank everyone for coming out. This is the second to last Monday for Shraavan. It's almost coming to an end. It's been a joy. I'm sure everyone who has been tuning in virtually and in person would agree. To sponsor any of the rest of the sessions for Shraavan, you can go on Bhavani Shankar on our website, bhavanishankarmandir.com/Shraavan. Or if you just go on bhavanishankarmandir.com, you will see the link. Our Bhagavad Katha will be commencing on the 30th of August and concludes on September 5th. We are looking for kitchen volunteers during the Bhagavad to help out with sharing food. Please see Auntie Annette, as she is in charge of this and coordinating this. Also, we are looking for multiple sponsors for the Bhagavad. So if you have a desire or anything that you want to celebrate in your life, this would be a great opportunity for you to do so. Our link for the sponsorship is up. It's also on the website, bhawanishankarmandir.com/Krishna. Also, we also need a lot of volunteers for other work, setting up the lights and so on. So if you'd like to volunteer for any type of work, we have a lot of spots available. Please see Uncle Mahindra. And lastly, tomorrow is Tuesday, Mangalvar, and we'd like to invite you all for our Hanumanji Chalisa chanting. We will be chanting 11 Hanumanji Chalisas, where everyone will have an opportunity to come up and offer whatever it is that you have, 11 fruits, 11 flowers, 11 dakshinas, whatever that you have. So please just come out and join in the celebration and the bliss of chanting and singing of Hanumanji Chalisa 11 times. We will now stand for Aarti. Before we do, we'll do Bhog. आवो भोग लगावो प्यारे शंकर, लगावो प्यारे शंकर, वो भोग लगावो प्यारे शंकर। पूर्णे शंकरा प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। शिव भक्तस्य ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर लागे धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा ओम हर 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 महादेव दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज ते सोहे स्वामी दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता रघुवर जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वरमाला
हरता स्वामी जगत शोधरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक स्वामी जानत अविवेक प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक ओम जय शिव ओंकारा ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव रघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगां जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शिरसा नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। बोलिए भवानी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सूर्यादि समस्त नवग्रह देवताओं की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, शेषनाग भगवान की, विघ्न विनायक गणपति महाराज की, लक्ष्मी मैया की, शरणेश्वरी माता दुर्गा की, सरस्वती मैया की, सत्यनारायण भगवान की, सूर्यनारायण भगवान की, नवदुर्गा भवानी की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, संध्यासनम आरती की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो जय के च पृथ्वी मनु जयन्तरिक्षे जयदिभितेभ्यो सर्पेभ्यो नमः।